Good evening everyone. Welcome to your English class. Today in our English class I am going to give the explanation of the poem The Kite, which is composed by Harry Ben. This is a beautiful poem for all the kite lovers. While reading the poem, you will feel as you are holding kites in your hand and flying them in the sky. जिनको पतंग उड़ाना पसंद है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लव दिस पोएम और वो ऐसा फील करेंगे कि वो अपने टेरेस पे खड़े हैं और इस पतंग को अपनी पतंगों को उड़ा रहे हैं. पोइट ने इतना ब्यूटीफुली उसको डिस्क्राइब किया है कि जब हम पढ़ते ही हैं तो वो फील आता है कि एज द काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. सो लेट्स मूव. This poem describes the beauty of a kite on the clear sky. In the first part of the poem, the poet has described how it looks for the first time, how it sails like ship in the sky when the wind blows, and how the kites take rest when the wind falls. And in the end of the poem, the poet had described it how the kite loses its charm when it got stuck on the top of a tree. So let's start. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail. So two rhyming words, blue, new, meaning of dive and a dip means, dive means अगर आप स्विमिंग पूल के बारे में सोचते हैं तो डाइव कूदते हैं, that is called to go down, नीचे एकदम कूदना. और डिप, if you remember a word dip means to go into the water with force and softly also, both the things, forcefully and softly. So the poet says, how bright on the blue is a kite when it's new. It looks very bright when the kite flies first time on a clear sky. Here the blue means not the color. The poet is talking about the clear sky कि जब पतंग पहली बार आसमान में उड़ती है, it looks very beautiful. It is noticeable. With the dive and a dip, it snaps its tail. What he says कि जब वो कूदती है, it's look like it as it is diving and dipping, and the tail of the kite is producing a cracking sound. Then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls. Again rhyming words are there, tides, rides. And here the poet has compared the kite with a sailing ship. अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में पोइट ने क्या बताया कि when the kite flies first time in the sky, it looks very beautiful, and when it moves forward, जैसे जैसे वो आसमान में ऊपर आगे की तरफ forcefully जाती है with dive and dip, softly and forcefully, the tail of the kite produces a cracking sound. And how it looks in the sky? जब वो आसमान में जाती है, the poet has compared the kite with a floating ship. उसने ship से compare किया है. The kite floats high in the sky just like a ship. The ship moves forward when the wind blows. अगर आप समुद्र में शिप को देखें तो जैसे ही तेज़ हवाएं चलती हैं, जो शिप है वो समुद्र की लहरों पर ऊपर नीचे होता है. क्रेस्ट मीन्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्रेस्ट? टॉप ऑफ द वेव. जो लहरें होती हैं वो पहाड़ की तरह बन जाती हैं, एंड शिप इज़ ऑन द टॉप ऑफ द वेव्स. इन द सेम वे, when the wind blows, the kite moves forward in the sky. So what he says, the poet has compared the kite with the sailing ship. The kite floats high in the sky just like a ship moves forward when the wind blows with great force on the top of waves with the help of a sailcloth, right? It moves forward when the wind is strong. जैसे जब जब wind strong होती है, ship आगे जाता है. In the same way, the kite also moves forward in the sky when the wind blows, then seems to rest as wind falls. But as soon as the wind falls, wind goes down, it seems as it is
also taking rest for while in the air. अगर तेज़ हवा होती है तो पतंग कितना तेज़ी से आपको उड़ती दिखाई देती है, राइट। और जब हवा रुक जाती है तो आप नोटिस कीजिए काइट ऐसे होती है जैसे बिल्कुल स्टिल है आसमान में, है ना, बिल्कुल आप भी आराम से पकड़ के खड़े रहते हैं, एज इफ़ द काइट इज़ टेकिंग रेस्ट। इसी तरह शिप है, जब समुद्र में उफान आ रहे होते हैं, लहरें तेज़ होती हैं, टाइड्स आर देयर, तो शिप ऊपर नीचे इट मूव्स फॉरवर्ड वेरी इन अ फोर्सफुली, राइट। और जब पानी में भी ठहराव होता है, the ship looks as it is taking rest. So here the poet has compared the kite with a ship. He has used figure of speech to beautify the poem. When the string goes slack, your wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. Again rhyming words, blows, goes. Slack, back. What's the meaning of slack? Slack means ढीला पड़ जाना. सो व्हेन द थ्रेड, स्ट्रिंग इज थ्रेड, अगर आप जब आपकी पतंग का जो धागा है, व्हेन द थ्रेड गेट्स लूजन द फ्लायर रन्स एंड रोल्स इट बैक. जो पतंग उड़ाते हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जब धागा थोड़ा ढीला हो जाता है ढील की तरह, तो जो फ्लायर होता है, उड़ाने वाला होता है, वो उसको पीछे की तरफ खींच के रोल करने लग जाता है. और वो कब वेट करता है? क्योंकि इस समय पतंग रेस्ट पर है, हवा चलनी बंद हो गई है. तो व्हाट ही डज, ही वेट्स टिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज अगेन. वो तब तक वेट करता है जब दोबारा से ठंडी हवा, तेज़ हवा चलती है, एंड फिल इट्स विंग्स विद एयर अगेन. और वेट करता है कब उसके पंखों में दोबारा से हवा भर जाएगी, टू फ्लाई हाई इन द sky. So string means thread, slack means loosen. So what he does, he used to roll back the thread and wait until the wind blows again, so that it, जब तेज़ हवा चलेगी, it will fill its wings with air again and it will fly high in the sky. Rhyming words, slack, black, right? Slack, back, blows, goes. How bright on the blue is a kite when it's new. Again the repetition of the same lines. यहीं से poem start हुई थी कि how the kite looks beautiful when first time it flies in on the clear sky. Blue clear sky में जब पहली बार पतंग उड़ती है, it looks very beautiful, it looks lovely, it looks charming. But a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. What is the meaning of ragged? It means torn or tattered, फटी हुई. जब वो अपनी ब्यूटी खो देती है, अपना चार्म खो देती है. तो what is the disturbing thing? The disturbing thing is that when the kite loses its charms and gets stuck on a top of tree. बहुत सुंदर लग रही होती है कलरफुल सी काइट जब आसमान में उड़ रही है, when it is flying high in the sky wagging its tail. But when it gets stuck on the top of the tree, किसी तार में या किसी ट्री में फंस के वो जब फट जाती है, it loses its charm also. It is not looking beautiful. It gives a poor look. So this is the life of a kite, right? And same is with human beings also. Right? We also loses our charm with the time. तो life भी ऐसे ही है, in the same way kite. And one more hidden meaning you can say कि जब तक आप सही direction में उड़ते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, you look beautiful. But when you get stuck in wrong things, you lose your charm. So this is the explanation of the poem. Read the extracts again and again and try to understand the poem. This is a beautiful poem for all kite lovers. That's all for today. Bye bye. Take care.